आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, तो क्या इससे घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? Namaste, Jai Hind and welcome to this edition of The Right Stand. I am Anand Narsimhan. Now for the last 5 working days, ladies and gentlemen, all that India has witnessed in Parliament is dharna, din and disruption. Modi versus India, not the country India, the new alliance, the committee of the opposition party. Sloganing war in Parliament, banners in Parliament, opposition remaining adamant on the Prime Minister's statement on the Manipur issue, saying he has to open the debate and it has to be under Rule 267 and he has to also answer in the end, otherwise nahi chalega. So that adamance is on display. The Parliament productivity in the last 5 days in Lok Sabha has been 13%. In Rajya Sabha it's 28%. And as the Sansad showdown continues, in Sikar, Prime Minister Narendra Modi cranking up the political rhetoric and literally signaling the onset of election season in Bharat over the next 9 to 10 months, ladies and gentlemen. Unsparing in his attack at this new alliance, I.N.D.I.A. That is the Indian National Developmental Inclusive Alliance. Elucidating the naam badalne se kaam nahi badalta adage, Prime Minister drawing parallels between the Indian Mujahideen, Student Islamic Movement of India, you see the evolution, and that became Popular Front of India, and their deeds with this Kong-led opposition committee. While targeting intent, he yet again drew parallels with the East India Company to emphasize that people cannot be deceived merely by invoking the country's name. What is your intent? That's the important aspect. Quoting Mahatma Gandhi's slogan of Quit India, Prime Minister Narendra Modi said almost a century later, it's time to give that clarion call again. But the call is against corruption, appeasement, dynastic politics, all of which he alleged are symptomatic of this alliance of 26 parties, which some are terming Special Chabbis. The opposition, however, undeterred, insisting that the Prime Minister is diverting attention from the real issues and not speaking on Manipur. They went on to assert that in 2024, the voters will reject the BJP. This is less than 24 hours after Prime Minister addressing the ITPO gathering said third term, we will be among the top 3. Literally saying तीसरी बार भी Modi Sarkar. And that too on a day when the opposition, actually not all of the opposition and not all of I.N.D.I.A, just the Congress moving this no confidence motion. So there again questions being asked, why did you do it without even asking us, getting us on board? We are supposed to be an alliance. So 2024, the fight, is it going to be quit I.N.D.I.A or quit India or jeetega India? That's the bigger question. Let's go across to our guests this evening. All parliamentarians except barring one. That is Anand Ranganathan, who is joining us. Good to have you with us, author, analyst, and he would have his own piece to say about all that is happening. Syed Zafar Islam, national spokesperson of the BJP, is with us. Mahua Majiji, Rajya Sabha MP of the Jharkhand Mukti Morcha, is with us. Namaste Mahuaji, good to have you with us in the studio. And we also have Shyam Singh Yadav, Lok Sabha MP of the BSP. Namaste, Jai Hind to the lady and the gentleman. Let's just get straight into the act. Let me ask you, Syed Zafar Islam, the Prime Minister is absolutely unsparing. He's taken the attack into the opposition. Opposition is unsparing.
गिविंग इट बैक हार्ड, पर वो सब आप अपने खर्चे पे करिए ना सर, सरकारी क्या टैक्स पेयर के खर्चे पे क्यों कर रहे हैं? 31 bills are supposed to be debated and discussed in parliament. वो कब होगा सर? ये 5 दिन का हिसाब मैं आपसे मांगूंगा तो आप में से कोई मुझ पे प्रिविलेज नोटिस कर देगा. They will move a privilege notice saying how dare you question parliament and parliamentarians. But it's all taxpayers' money, sir. Anandji, absolutely, Anandji, you are spot on. It is taxpayers' money, and I think the opposition parties should behave responsibly because they are highly irresponsible as an opposition parties, and put together they are behaving as if they don't have any responsibility or accountability to the people of this great country, not only the taxpayers but the people as a whole. Secondly, they wanted a discussion on Manipur. We agreed for discussion on Manipur. We said that we want to have a discussion, detailed discussion, and the Honorable Home Minister said on the floor of the Parliament that let's have a discussion on Manipur. It is false. Then they said okay, no, because their intention is not to discuss the Manipur, they just want to disrupt the Parliament. They will now stand exposed because it is not only he made the statement on the floor of the Parliament, it is followed by a letter that how much you want to, let's discuss in detail, let's not worry about the time, you take how much time you want. So in terms of Rule 67, 267 or Rule 176, doesn't hold water because the Honorable Home Minister in his letter addressed to leader of opposition and leader of in Rajya Sabha and Lok Sabha has very clearly later said that there is no constraint on time. Let's discuss. You want to discuss about Manipur? Let's discuss. But they are not keen. They want to just disrupt the Parliament. They do not want business to be transacted on the floor of the Parliament. They do not want bills to be passed to become legislation because their intention is only to disrupt the Parliament and mislead the nation. But they stand exposed. They completely stand exposed because when they will go to the public will say the ruling party said let's discuss. You were not keen. Ruling party, you said 267 because you will have endless discussion. Okay, the Honorable Home Minister sent a letter said that as much more time you want, I will give you that time. Let's discuss. Exclusively, not Chhattisgarh, not Rajasthan, exclusively Manipur. But they are not honest. Their intention is not honest. They are misleading and they will continue to mislead. They will not let the Parliament function. And it is not only this time. This time Manipur, earlier Pegasus, earlier prior to that, some other issues. They want to just rake issues only with one intention to disrupt the Parliament, let the business not be transacted. Let the opposition is there. Opposition is there on the panel. Let them respond. But my humble submission is, ताली एक हाथ से नहीं बचती. सरकार आपकी है. You have brute majority in Parliament, and still you are not allowed. You are not able to get Parliament to function and get people on board. That also reflects on your inability to manage the opposition. And we'll come back to that. We'll come back to that. Wait, sir, allow me 10 seconds only. 10 seconds only. 10 seconds. Ji. Only I'm saying, see, when there is a process, an established process that everything will be discussed in BAC. So BAC, there is a meeting of minds in BAC that these are the issues which will be discussed. And subsequently you change your mind, you come on the floor of the Parliament and you disrupt it. How will you discuss this? How will you transact the business? So then they are highly irresponsible. Then sir, they will be made accountable by the people of this great country. No sir, but the point is, I have critical bills which as a citizen of this country, I want accountability to this government. This is the last working session of Parliament. After even in the winter session, then you get into caretaker mode. Nothing of this sort is going to happen. Mahua Majiji, do you want Manipur discussed or not? 2.5 घंटा तो 2.5 घंटा शुरू तो कीजिए. 5 दिन से कह रहे हैं डिबेट करना है, कोई डिबेट नहीं कर रहा. अरे कहाँ 2.5 घंटे? अच्छा एलओपी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो एलओपी अरे शुरुआत तो 2.5 घंटे से रुकिए. आप महुआ जी को बोलने दीजिए. सबसे बड़ी बात कि एलओपी जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है. और सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हाँ माननीय अमित शाह जी चाहते थे बोलना, चर्चा करना, लेकिन चूंकि वो मणिपुर गए, वहाँ 3 दिन तक रहे और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, शांति बहाली हो गई. उसके बाद उस तरह के वीडियोस आने लगे. आपने देखा होगा कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है. इसलिए जो भी इंडिया टीम के लोग हैं वो चाहते हैं कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी आए और वो आकर इस गंभीर मुद्दे पर बात करें.
ऐसा नहीं कि उनके पास समय नहीं है, वो हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, वो विदेश भी जा रहे हैं। होम मिनिस्टर कौन है? जो भी रहे आप, नहीं, देश का होम मिनिस्टर कौन है? ठीक है, जो भी रहे, लेकिन अरे जो भी रहे नहीं, देश का होम मिनिस्टर कौन है? आप मुझे ये बताइए ना महुआ जी। देश इंटरनल सिक्योरिटी, नहीं, आप पार्लियामेंटेरियन है, मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस शख्स पर है? ठीक है, वो अमित शाह अगर वो अमित शाह जी पर, अगर वो शख्स कहने को तैयार है कि मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, आई विल स्टैंड देयर एंड आई विल होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल। आप ये कह रहे हैं कि देश के होम मिनिस्टर की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा है कि जब किसी राज्य में, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में कोई घटना होती है, तो कौन जिम्मेदार है? उस थाने के थाना प्रभारी। लेकिन क्यों ममता बनर्जी को, क्यों मुख्यमंत्री जी को? क्योंकि वो स्टेट के होम मिनिस्टर भी हैं। नहीं, ठीक है, ममता बनर्जी के पास होम मिनिस्ट्री है मैम, उनके पास है। अगर किसी स्टेट में अगर होम मिनिस्ट्री नहीं भी रहती है, ममता बनर्जी के पास होम मिनिस्ट्री है, तो इसीलिए ममता जी से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आंतरिक सुरक्षा की नहीं, आप मुझे, आप प्रधानमंत्री, देखिए आप प्रधानमंत्री जी से आप प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछिए उनसे। नहीं, लेकिन सबसे पहले तो आपको देश के गृह मंत्री से पूछना चाहिए ना, आंतरिक सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। कहा जा रहा है कि इस पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें पहले माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखे, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों अपनी बात, आप मुझे ये बताइए, हट क्यों कर रही हैं आप? इसलिए हट किया जा रहा है कि वो आखिर इस मुद्दे पर इतने अगंभीर कैसे हो सकते हैं? जेनोसाइड का मामला है। जेनोसाइड का क्या? एज अ पार्लियामेंटेरियन प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू से जेनोसाइड। इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड मैम। पार्लियामेंट इज इन सेशन। एज अ पार्लियामेंटेरियन प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। कहां पे जुलाई 18 जुलाई से एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुआ, आप जेनोसाइड क्यों कह रहे हैं? कि अगर 800 से 1000 लोग मिलकर एक गांव पे हमला करते हैं और उस गांव की महिलाओं को, वहां के लोगों को वहां से निकाल के उनकी हत्या करते हैं, उनको नंगा करके घुमाते हैं। क्लैश है मैम, ये कोई प्रोग्राम नहीं, आप बहुत जो भी आप बोले महुआ जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज यू आर अ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट इज इन सेशन, दिस इज एन एथनिक क्लैश बिटवीन टू कम्युनिटीज, बोथ द मैते एंड द कुकी कम्युनिटीज हैव सफर्ड, बोथ साइड्स हैव हैड लॉसेस, देयर इज नो वन साइड टू इट, प्लीज डोंट कॉल इट अ पोग्राम, इट्स नॉट अ पोग्राम एंड इट्स नॉट अ जेनोसाइड टू यूज that word is very highly irresponsible. बट उस सम्मान में आपको बता दूं कि कारगिल युद्ध में एक सूबेदार की जो थे उनकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया। उन्होंने कहा मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। तो ये कितना गंभीर मामला है। आप ये गंभीर मामला है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, गंभीर मामला है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के गृह मंत्री अगर कहने को इस चर्चा को शुरू कर स्टेटमेंट देकर इस चर्चा को शुरू करने को तैयार है, पार्लियामेंट में 2.5 घंटे से ऊपर की चर्चा होने को तैयार है, लेकिन आप क्यों हट कर रही हैं? यानी आप 5 दिन में कोई भी बात हो पाई है संसद में? नहीं हो पाई। अच्छा रुकिए, श्याम सिंह यादव जी आप मुझे बताइए, shouldn't there be a discussion if the home minister is ready to answer and if the parliament feels the home minister's answer and home minister's response is inconvincing, then should they not insist on the prime minister? Does this alliance really want a discussion on Manipur in parliament? Mr. Ranganathan ji, रंगनाथन जी दूसरे सर, मैं नरसिम्हन मनु, पर दोनों का नाम आनंद है, आप आनंद बोलिए, हम दोनों समझ जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा मिस्टर आनंद जी, the everyday home minister or parliamentary affairs minister, even honorable speaker announces in the parliament that we are ready for the discussion, we are ready for the discussion. I must tell you, Anandji, it is totally white lie. It is totally white lie. I say, because I will have to respond to this, interested in after he completes. They should listen to me. आप ही बोलिए। They should fix up the date and time. Look, here on this day we are ready for and this is a very serious matter. The such type of arson, such type of killing, such type of mishappenings never happened in recent past in any state. So it is very important. And what for Prime Minister is there? Is it not constitutional and moral duty of the Prime Minister to attend the House, to come to House and reply the queries of the opposition parties? What for is Prime Minister? He has been made Prime Minister for touring abroad.
for election purposes, for holding rallies in different states. It is very shameful that our honorable Prime Minister is not attending the House Parliament. But I am must asking you, say sir, as a Lok Sabha Another MP, thing- who is responsible Just a for the second, internal security? Anand, Sir, let me respond. Let me respond to this. Yes, sir. Yes, sir. Let's just a second, Anand. Ye- Let me. yes, Zafar I have Islam. some question to him. Yes. Yeah. He is a member of parliament. He is a member of parliament. So is Mahua. Mahua ji. हाँ, Let me pose these two questions to both of them. जी सुनिए, No. listen to me. सुनिए Listen to me. श्याम जी सुनिए. Listen to me. श्याम जी सुनिए ना पहले मेरे एक जवाब आप साथ दे दी. You can respond to my question Honorable, also. Listen to me. एक मिनट श्याम जी. I'm replying. I'm replying. Let me. No. I have a Technically, I have a question. Shyam You ji, must if respond you to may that please question. yield, Zafar Islam of the BJP, who's an MP himself, wants to ask you something. Reply to Mr. अरे Anand आप later. हाँ जी, Mr. Anand. हाँ ठीक है sir. No. Listen to You. Sir, you can park my question with you and you can answer it later. Zafar Islam wants to intervene. Please allow him. Yes. For tackling internal disturbance. हाँ. But in such important matters, normally it is a tradition. Prime Minister comes, Prime Minister faces the Sansad. और वो जवाब Okay. देता So let है, me Mr. respond to Anand. them. Let me Yeah. respond to him. Yeah, please respond, Zafar Islam. अच्छा let me respond. अच्छा जरा श्याम जी let me respond to your question. When you are talking about tradition, which tradition you are talking? Tomorrow you can No. say any other minister will reply. Tomorrow, no. First listen to me. Tomorrow, He is अरे responding. बोलने BJP दीजिए, is आप responding to लोग you, सुन Shyam लीजिए, Singh आपको- Yadav. Please आपको listen. जानकारी कम है। Yes, Sai Zafar Islam. अरे आपको जानकारी कम है श्याम जी. Why you dilute these श्याम जी traditions like श्याम this? जी आप सुन नहीं पा रहे हैं. आप पहले सुनिए लोगों को. आप सुनिए. Let me respond. नहीं एक मिनट अभी आप सुन लीजिए. मेरे First Zafar of all, Islam, go you are ahead. saying that there is a tradition. There is a tradition. Which tradition you are talking about? 1993. I just want, since you have spoken about tradition, 1993, there was a Kuki Naga at that time ethnic clashes. In 1990, 550 people died at that time. It was Congress government. And who responded? Who responded? Who visited there? It is the MOS for 3.5. He visited for 3.5 hours. Only Manipur he visited 3.5 hours. It was responded by Ministry of State. Neither Prime Minister nor the Home Minister. Here Home Minister wants to respond. Something happens against Here you, Home Minister wants to respond, sir. you just You are dig not down, aware. dig You are talking any about past history. parliamentary tradition. Then you are not aware of it. Please you get the run details away. first before you are making You- any statement. You No, run who is away, running away? You are not you even run aware. away facing You are making a serious statement. questions. This is something you You do not always want. You do take not want shelter discussion. We are saying behind discussion. We past want history. discussion. We want discussion. You always take We shelter want behind past discussion. history. Are you ready for you don't discussion? reply. One minute, You one minute, don't Shyam Singh take Yadav ji, serious please yield. questions. Just now, sir, You on are the not- debate, Shyam Singh ji, you you are said this is not tradition. serious. ये रिवाज है. Endlessly जिस talking तरीके से about किसी India. जो प्रक्रिया चली आ रही है, no, you are Shyam Singh ji, serious. just by continuously speaking, you cannot just try and derail the debate or override the debate and corner the debate. प्लीज लिसन टू मी सर. अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे तर्क दिया कि जो रिवाज है, जो तरीका है पार्लियामेंट का, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. जब आपको पास्ट इंस्टेंसेस गिनाया गया तो यू आर सेइंग यू आर गोइंग बाय द पास्ट. ये तो आप इधर से भी डोल बजा रहे हैं, इधर से भी डोल बजा रहे हैं. दैट्स नॉट फेयर. द सेकंड पॉइंट सर, if the prime minister has to come into the house, then the prime minister has to come towards the end of the discussion to close the discussion, but the opening statement has to be made by the person responsible for the internal security of the country. That's the home minister. The government is saying 2.5 hour discussion is ready. We are ready. You have not delayed. You have not forced the government to push for a discussion. By your adamance, you are allowing the government to get away with not having a discussion at all. You should say, come to the floor, have the discussion. 2.5 hours not enough. We need another 2.5 hours. Continue, let everybody say, and in the end say, no, we want the prime minister to conclude. That should have been the way if you really want to counter the government. Right now, you are giving the government an easy getaway. Anand Ranganathan, and then I'll move on. Then I'll quickly. Then 1 minute. 10 seconds. yes, Syed Zafar Islam. 10 Anand, seconds, and then L Hanumantaya is also with us. Ji. There is no constraint on timing. Not 2.5 hours. The Honorable Home Minister has written in his letter to Leader of Opposition, and that take as much time as you want. Only restrict discussion to Manipur. Let's have a discussion.
But these people do not want a discussion. They are misleading the nation. We are absolutely upset with their conduct and their style of functioning in the parliament. All right. They want that people are blind in this country. We want to have discussion. You want to have discussion. Let's have discussion tomorrow. Right. That's fantastic. But my point is, sir, you have also not been able to Anand, convince. Shyamji, please yield. Shyamji, please yield. Let me bring in L. Hanumantaiah is also there. Anand Ranganathan is also there. They have been listening to everybody for 20 minutes. So let's just bring their comments in and then I'll come back to you. Please yield, sir. Yeah. Now the other aspect what the Prime Minister is saying is, and this is reflective, नाम बदलने से काम नहीं बदलता. नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, महुआ जी आपको पता भी था कांग्रेस ने मूव किया है, फिर अलायंस किस बात का हो गया? एल हनुमंतैया जी इज विद अस, बट बिफोर दैट आनंद रंगनाथन, योर थॉट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग? क्विट इंडिया, जीतेगा इंडिया? डज दिस इंडिया मेक एनी डिफरेंस? A very good evening to you, A.N.A.N.D. I just thought for the benefit of Mr. Yadav, who I have great respect for, I'll make a distinction between the two Anands. So you can choose whether you want to be just plain Anand or A.N.A.N.D. No, but the fact of the matter is, Anand, the two points that I like to make very briefly. One is on, rightly so, the Prime Minister elaborating that just by having India, even if it's an acronym and you say it speedily as India and try to make this insinuation, India jeetega, Modi pe, this, that, all that stuff, by changing the mere name, you will not change the nature of the coalition. The coalition remains UPA, except that it's even worse, more corrupt and more conceited than what it was from 2004 to 2014, and I'll explain with points. But before that, I want to come to this. The whole thing hinges on who do you trust. Now, if it was a presidential election, it is game over, because Modi versus who? Any of those 26? I'm sorry, but the fact of the matter is they will not be able to hold a candle to Modi. It's a fact. Even the opposition acknowledges it. But we are not a presidential form of democracy, so therefore the fight. But here, before I come to the other point, I have great respect for Mahua ji. She is a member of parliament as well. I want to ask her, this India alliance has said it wants to eradicate corruption and sleaze from India. Then Mahua ji, please explain, why has this alliance or Congress teamed up with people who are at loggerheads? JMM accused Congress of cheating the people of Jharkhand and India. Congress accused JMM of horse trading. Last year, around the same time, in fact, on July 11, 2022, Aam Aadmi Party accused both JMM and Congress of rampant corruption. All three of you are at loggerheads. And you believe that when it comes to India, you will work in unison to eradicate corruption and sleaze? How is that possible? People are looking at you. People are looking at when Congress says it wants to eradicate sectarianism from India. People are saying that you have teamed up with Bhagwant Maan, whom you are accusing in the state of promoting Khalistanis. So you can't have the two. I'm sorry, you have to make a distinction. If you want to eradicate corruption from India, you cannot team up with corrupt people. If you want to eradicate all the ills from India, you cannot team up with people whom you are accusing of all these ills. It's plain logic. And number two, very quickly, Anand, the fact of the matter out here is that I don't know why BJP did not have this debate on Manipur 2 months ago. Because the fact of the matter is very clear. It has the data and the figures over the last 10 years on its side. The Congress and the UPA would have been brutally exposed on Manipur. Manipur is more stable, more peaceful than it ever was before, barring these 2 months. And what is the reason for these 2 months? Is it the BJP, the upheaval? It is a High Court ruling. It's got nothing to do with the BJP. In fact, BBC has said that there are underlying reasons that have got nothing to do with the BJP or Metis or the other tribal groups that it is fighting with. So let us have the facts on the table. Why not have this debate? And if you cannot have this debate, Mr. Islam, I plead to you, exactly whatever you wanted to say on the floor of the House, please hold a press conference where Amit Shah can take 5 hours, 10 hours, lay out all the facts that you claim you are not being allowed to say in the parliament, lay it out in the press conference. What is stopping you? I'm giving the first. Okay. Let me give one clarification. Yes. Anand. Yes. Anand, Ranganathan, let me
update you and all the viewers and the panelists also that when the all party meeting was there, the Honorable Home Minister made a presentation giving all the details. They have all the details. That's why saying their intention is not noble. Their intention is to only disrupt the parliament. We want to know the details. And Aslamji, yes, it will be made. We want to know the details. We will made it. Make it public. Within 2 days it will. Within 2 days it will made public. All these people who are trying That's to breaking news. Trying to Anand, mislead the that's breaking people, news. they will be exposed. Stand exposed. Completely stand exposed. L. Hanumantayya ji has not spoken. Mahua ji wanted to intervene. Hanumantayya ji, with your kind permission, please allow her 1 minute and then I'll come to you, sir. Thank you for your patience. I'm giving the first answer. जी. आपने कहा कि एक दूसरे को एलिगेशन देते थे, सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब एक साथ आने से कैसे होगा? People are looking at you. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में 3 दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी कहा गया, जिनको चोर कहा गया, उनको आप कैसे अपने पार्टी में लेते हैं? उनको मंत्री भी बना देते हैं। आप किस तरह से उनको अपने गठबंधन में लाते हैं? जैसे ही हमारे बेंगलुरु में टीम इंडिया की मीटिंग हुई तो पहले तो आप कहते थे कि 1 वर्सेस ऑल देश में, तो फिर आप दिल्ली में 38 पार्टीज को अपने साथ आपने क्यों गठबंधन में लाया? क्यों आप तो कह रहे थे कि आप अकेले काफी है सभी पार्टीज के लिए, फिर अचानक से आप 38 पार्टीज को लाते हैं, उनमें से कुछ पार्टीज ऐसे होते हैं। पर आप उनके काउंटर को भी सुनिए माहुआ जी, वो ये कह रही है कि आनंद जी सिंपल बात कर रहे हैं, 2 wrongs don't make a right। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है, तो अगर आप भी वही कृत्य कर रही हैं तो क्या आप मान रही हैं कि आप भी भ्रष्ट हैं? ये भ्रष्ट आप कैसे साबित करेंगे? नहीं, मैं अगर ये कहूं कि आप ईडी की छापेमारी करा के, आप सीबीआई से रेड करा के आप ये साबित करें कि वो भ्रष्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चलिए ठीक है, बीजेपी मौका पर है, मैं झारखंड में मैं आपसे पूछ रहा हूं जिनके ऊपर क्या आप बीजेपी हैं? लेकिन उनके यहाँ ना तो आनंद भी आपसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं। महुआ जी, आनंद भी आपसे जवाब दे रही हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या, बोलने दीजिए, मैं अपनी बातें क्लियर कर लेती हूँ पहले। आपने कहा कि सारे भ्रष्ट एक साथ होने से क्या सही हो जाएगा? ऐसा नहीं है। भ्रष्ट आप उनको कह रहे हैं जिनके यहाँ ईडी छापेमारी कर रही है, जिनके यहाँ सीबीआई जारी है। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में पिछली सरकार में जब भाजपा की आप फिर विषय को सारे वहां पर नहीं, महुआ जी लेट्स कम बैक टू देखिए ना प्लीज महुआ जी प्लीज कम बैक। नहीं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कम बैक टू द सिंपल क्वेश्चन। अगर आप कह रही हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह बिहेव कर रही है, जिनको परसों आपने भरा बुला कहा, आज आपने अपने, तो क्या आप भी वही हैं? नहीं, हम वही नहीं, आप वही नहीं, आप वही नहीं है आप। तो अगर आप वही नहीं है तो फिर वही तो आनंद रंगनाथन आपसे पूछ रहे हैं कि जिनको आपने भ्रष्ट कहा आज आप उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं, तो फिर आप और बीजेपी में क्या फर्क हुआ? तो किसी में कोई फर्क है नहीं। हाँ, तो फिर अब तो अभी आपने 15 सेकंड में अपनी बात बदल दी। आपने कहा हम बीजेपी जैसे नहीं है, फिर आपने कहा कि भाई हम दोनों सेम है। जिनके आपको मैं बता दूं, हमारे झारखंड में एक माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं जो कि अभी भाजपा में आ गए दूसरी पार्टी से। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारी है, अगर कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। आप उनका हवाला दे रही है, पर अगर आप कह रही है कि देखिए, या तो आप कह रही है कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अगर फिर आप लोग सब सेम है। अगर आप लोग सब सेम है तो आप कांग्रेस को बड़ा बुला कहिए, लेकिन आप कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो आप बीजेपी को बड़ा बुला मत कहिए, क्योंकि बीजेपी वही कर रही है जो आप कर रही है। ना आसानी से उनको भ्रष्टाचार ना ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो भ्रष्टाचार साबित कैसे होंगे? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर आपके देखिए, मैं देखिए झारखंड के व्यक्तिगत विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर भी आपकी टॉप ब्यूरोक्रेट जो कि राइट हैंड है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है, विद एविडेंस पकड़ी गई है। तो आप रुकिए, पूरा भ्रष्टाचार 2005 का है जब वहां भाजपा। अरे तो फिर अगर वो भ्रष्टाचारी है तो फिर आपकी सरकार में आपने उनको हटाया क्यों नहीं? आपने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं लगाया? आप फिर विषय को भटका रही है। देखिए सिंपल बात है, अगर आप सिंपल बात है महुआ जी, अगर आप किसी पर एक उंगली दिखाती है, 3 उंगलियां वापस आपके ऊपर पॉइंट करती है, ये सिंपल लॉजिक है। आपने 10 सेकंड में आपने नहीं, आप विषय को इधर से इधर भटका रहे। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि इस अलायंस का कृत्य क्या, कि जिसके साथ आपने हाथ मिलाया उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया आपको बताए बिना, तो फिर आपका यहाँ औचित्य क्या है? आपका स्टैंडर्ड क्या है? आपका लेवल क्या है? इंडिया कर तो रहे हैं आप वहां लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट, बट दे मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन विदाउट इवन टेलिंग यू, सो दे डोंट इवन कंसीडर यू एज एन एबल ally. They don't even consider you. That's what it looks like. L. Hanumantayya ji, Quit India, SIMI, Indian Mujahideen, Popular Front of India, Indian National Congress, all were set up with a different intent than the cause for the country.
That's the whole thought process. So if Mahatma Gandhi said quit India to the Angrez, Pradhan Mantri is saying quit India to the Dinesh, quit India to the appeasers, quit India to the corrupt. आप क्या कहेंगे? See, today the issue is not that. Not the corruption is the issue of the day. Manipur, when the discussion is demanded by the opposition parties, the ruling government did not allow them to happen it. They allow it is under 157, not under 267. And the Prime Minister, please understand, when the Parliament is starting or in deliberations, he goes to the press and gives 30 seconds reaction. Whereas it doesn't come to the Parliament and take the questions of the parliamentarians and give them the answers. Is it right on the part of the Prime Minister that he has to answer the questions of the parliamentarians or not? That is point number one. Point number two, the Home Minister has said, yes, we are ready for discussion. Under what rule you are ready for discussion? If the rule is sufficiently time is given to the members of Parliament, then all the aspects of the, sir, you understand, since 2 months, the violence is going on in Manipur. But the Prime Minister never reacted, never uttered a single word on that. Instead, he toured everywhere, he spoke on everything, but not on Manipur. So what is this? What is this? What does it speaks? We must have to tell the people of this country. Let me respond. And Let me Parliament respond. is the He's been body patient. Let him where say the his speech. serious thing is going on. We have time, sir. We have the time. Let him discussion say has his to be speech. done there. But if we don't allow the discussion in the Parliament, then where else the parliamentarians will go and have the discussion? And what is that the government has to do? What is the responsibility of the government? Okay. Okay. When the whole Mr. state is Hanumanthaiah, burning, are you willing to yield and now, somebody sir? said it is a nature of genocide. Then one point. Yeah. The nature of genocide, is it not that it is between the communities? It is between the communities and the killings is going on. Okay. It is affected every part of the life. Okay. in Manipur. Hanumanthaiah ji, But the Hanumanthaiah Parliament ji, is not in Hanumanthaiah the ji. position to discuss. Okay. and- Hanumanthaiah ji, are you willing to yield, Yes. sir? Yeah. If you're willing to Let- yield, sir, the word genocide Yeah, was please, used. please. No, no. Yeah, the word genocide was used by your own alliance partner, and you are No, saying it that is she's the wrong. nature of genocide I am talking. It is in the nature of genocide. No, it sir. is not, I am Sir, not please telling take it is out genocide. 1 minute, 1 minute, There is sir. an 1 instinct minute, of 1 minute, genocide sir. into 1 that. minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. You're all parliamentarians. You are there with Okay. a certain responsibility, sir. As Yeah. a citizen of this country, and as somebody who Definitely. expects a certain level of responsibility and maturity from parliamentarians, please open the word genocide and understand the meaning before you use that word so flippantly, sir. Please No, open that word and please use it I am responsibly. telling you- Responsibly No, is no, my I am- humble I am request, telling because, you- sir, as an ordinary citizen, I cannot serve a See, I privilege am- notice to you, See, I and have I heard cannot of hold you. you accountable I have for heard of statements you. that are I am irresponsible and that are No, I am not telling that you- are I am unwarranted, sir. telling you So I am the just going to nature of I'm just genocide going in to that I'm just going to between the stay there, sir. communities. That is I'm what going to we table said. it there, sir. The I'm going to same word table has it there, been and I'm said going to inside leave it the to your good parliament. They are sense. not here, I'm going to not on good. that I'm going to channel, leave I'm it to your telling good you. sense. It is inside You the are a parliament. parliamentarian. I You are an understand what elected you are member of the Lok intending. Sabha, sir. You should have. I You know. have spent a lot I of know time in about it. I in know public what you are life. telling. You are a member of the Rajya Sabha. You are supposed to be an intellectual, just like Mahua Maji ji. Please use your intelligence and don't use words just for the sake of 100%. political effect, With all because it will have a responsibility, damaging I am effect on using your that own word. With all on your I own am stature using as a that word parliamentarian. just Mahua ji, you because- had a point to say, please. Sir, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप देखिए सरकार कितनी असंवेदनशील है कि इतनी सारी महिलाओं के साथ जो भी कृत्य वहाँ हुआ, जो वीडियोस आए, उसके पास महिला बाल विकास मंत्री ने एक शब्द, एक स्टेटमेंट नहीं दिया उस तरह का, जबकि वो छोटे छोटे बात पर वो अपना स्टेटमेंट देती हैं, उसको वायरल करती हैं। आप क्या हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि महिला सुरक्षा के बिल्कुल लिए कीजिए। उनका एक अच्छा स्टेटमेंट आना चाहिए था, बल्कि उनको मांग करनी चाहिए थी पर माननीय ये उम्मीद प्रधानमंत्री एक जी से। महिला होते हुए ना, बिल्कुल, मैम,
उनको आना चाहिए। जैसे आप रेखा शर्मा जी से ये उम्मीद कर रही हैं, बिल्कुल मैं उम्मीद कर रही हूँ। जैसे आप ये एक बात रेखा शर्मा जी से भी उम्मीद करती हूँ रेखा शर्मा जी कि वो भी इसमें अपनी बात रखें और इसको लेकर। नहीं, अगर आप जैसे एक महिला होकर आपको जितना दर्द मणिपुर के लिए हो रहा है, शायद उतना ही दर्द आपको झारखंड के लिए होना चाहिए, उतना ही दर्द आपको बंगाल के लिए होना चाहिए, उतना ही दर्द आपको राजस्थान के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। लेकिन सब जगह की परिस्थितियां अलग हैं। वहाँ की सरकारों ने तुरंत गिरफ्तारियां की जफर इस्लाम, यहाँ पर आप देखें कि जफर इस्लाम wanted to respond. गिरफ्तारियां नहीं हुई। जी, coming to Anand Ranganathan after Zafar Islam. Yes, Zafar Islam. Where he's running away, Mr. Hanumantaiah? I think he'll come back. Respond to him. He'll come back. He is a member. He is a Rajya Sabha member nominated by Congress Party. I think he should dig the record and see what response Congress had given to the Parliament, who had responded in the Parliament, who had spoken on the behalf of the government. It is the Minister of State, Mr. Pilot, during 1993 ethnic clash between Kukis and Nagas. He visited only once for 3.5 hours. 2 hours he was at the airport. 1.5 hours he was having lunch with the Chief Minister. After that, he never visited there. It is, and just see the contrast. 550 people died at that point in time. See the contrast. Here, the Minister of State was camping there from 25th June to 25th May till the June 21st. He was just camping there. The Honorable Home Minister visited there personally. He was camping there for 3 days. Honorable Home Minister wanted to respond. Discussion should take place on the floor of the Parliament instead of Minister of State at that point in time, only for 40 minutes. That's all. At that time, when the Prime Minister was asked, he ran. He didn't even respond. My point is, sir. So what are you talking about? What you have shared with all the parliamentarians before. Are you ready to discuss? Zafar Islam ji, what you have said on the show tonight, that in 2 days we will have all the details. The Janta, the people of the country will have the details of what's been shared with all members of Parliament. Absolutely. And in the BAC before the session began. We would like to see those details. In the meantime, Anand Ranganathan, as I come to you, this is the update on Manipur. Centre speaking to both communities in Manipur, hopeful to get them on the same table soon. Talks at an advanced stage. Right now, this is the latest status. Violence still there in Manipur, but at a smaller scale. No death reported since July 18th of July. 35,000 central forces have made buffers between both communities. Video case to be handled handed over to the CBI and the centre to recommend trial in a separate state. The man who shot the video has been caught and the phone has been seized. No guilty person will be spared is a commitment coming right from the Prime Minister. There is no price hike situation in the state. Adequate supplies of essentials are there. Biometric and thumb impressions to be taken of all people coming from Myanmar. Henceforth, this concern was also raised with the Assam Rifles allowing about 700 plus people in. Centre to fast track the fencing project with Myanmar. Survey is being conducted. PM has been in constant touch with officials for updates on the Manipur situation. This is what government sources have told CNN News 18 on the Manipur situation today. So it's not that work is not happening, but is it being communicated ably enough? That's the first point. And secondly, if politics is about perception and about narrative, then is the opposition not stealing a march on the government right now? Anand Ranganathan, final comment on the debate, please. No, absolutely. Very briefly, Anand, you've hit the nail on the head. And my what I said to Mr. Islam, good friend, was that all those things that BJP wants to convey through the Parliament to 1.4 billion Indians, like it should come out irrespective of whether it is allowed to speak in the Parliament. Because we, the people, deserve to know. And as I said, the data, the figures are with the BJP. Manipur is more peaceful, barring the last 2 months, more stable than it ever was. It's a fact. You can see from the districts where AFSPA is and AFPA was. But can I please take another 30 seconds to actually counter Mahua ji? Because she said she's factually wrong when she said Smriti Irani ji has not reacted to the horrendous incident that all of us have rightly condemned. She has. But when she says that she has sahanubhuti and she equally fights for every such instrument, I want to ask her that in September of 2022, a 13-year-old was gang raped in Gurdaspur in Punjab, where AAP, your alliance government, is. For 6 months, the police did not act.
allegedly the police allowed the perpetrator to flee. Can you show me, Mahuaji, your tweet or one comment on that horrendous incident? Can you please show me? Because I checked, you have not commented on that thing at all. अगर आप कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी घटना थी, तो आपको तो जनता ने चुना ना, आपको लाया कि पहले जो घटनाएं हुई उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जनता तो चाह रही है कि आप यहाँ शांति बहाल करें, हमारे देश के हर राज्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। आपकी जिम्मेदारी है, आप कह रहे हैं कि हम बार बार आएंगे। आपकी जिम्मेदारी पंजाब में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी अगर पंजाब में है तो पंजाब में कांग्रेस की जिम्मेदारी बंगाल में है, मैं ये कहना चाह रही हूं बीजेपी की जिम्मेदारी मणिपुर में है। तृणमूल कांग्रेस हो या जो भी हो, तो जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है ना मैम, तो वो सेंटर पे आप लॉ एंड ऑर्डर थोप देंगे तो फिर आप कहेंगे फिर वो वीडियो 4 मई का था, वो 18 को वहां पर रिपोर्ट जो दर्ज किया गया और उसमें भी वो गैंग रेप नहीं आया, उसको लाइट कर दिया गया। तो हम कहीं भी किसी भी स्टेट में हो रहा है। 357 केसेस हाईलाइट हुए थे बंगाल में। आपने ट्वीट किया, आपने ममता बनर्जी से सवाल पूछा इससे पहले कि आप अलायंस में उनके साथ बैठे कि देखिए इसको आपने सॉल्व किया। जितने लोगों ने बंगाल से आप ही के स्टेट के अंदर पलायन किया, झारखंड के अंदर, उनके साथ उनके लिए आपने क्या किया? प्रश्न पूछने के लिए बहुत हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा मैम, इफ यू पॉइंट अ फिंगर एट वन पर्सन, 3 विल पॉइंट बैक एट यू। आई हैव टू वाइंड अप। जवाबदेही रहती है, लेकिन यहाँ पर 80 दिनों से घटनाएं घटती रही और किसी को पता तक नहीं कि वहां पर अंदर अंदर वो जल रहा था, ना न्यूज बाहर आने दिया गया। अगर मान लीजिए मणिपुर में सब कुछ इतना नॉर्मल है तो फिर वहां पर क्यों इंटरनेट मणिपुर में कोई भी मणिपुर में अब सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन क्यों बंद है? तो फिर पर एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, पिछले 2 महीने में, इससे पहले कि ये 10 दिन पहले जब सरकार या कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम मणिपुर पे बात करेंगे, आपने कितनी बार मणिपुर पे ट्वीट किया मैम? आपने बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन कितनी बार ट्वीट किया? ये प्रश्न अभी आनंद रंगनाथन ने आपसे पूछा। जफर इस्लाम नहीं, झारखंड में लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़ रहे हैं क्योंकि वहां बांग्लादेशी आके बच रहे हैं पाकुर और बाकी इलाकों में। वहां पर आपने कितनी बार ट्वीट किया? वेस्ट बंगाल से अभी भी 2021 के चुनाव के बाद और पंचायत चुनाव के बाद लोग झारखंड और असम पलायन करके गए। आपने कितनी बार ममता बनर्जी से पूछा? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैम। अगर किसी भी दूसरे कंट्री से कोई इस कंट्री में आता है तो उससे सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है? तो ये प्रश्न आपने पार्लियामेंट में उठाया है? बिल्कुल उठा रही हूँ। अगर मान लीजिए दूसरे कंट्री से कोई आ रहा है हमारे कंट्री में तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो आप उनको अपने स्टेट में बसने देंगे? वहां पर जो संथल है और संथल परगना में उनको पलायन करने देंगे? देखिए डिबेट का ये विषय नहीं है, इसलिए मैं वापस रुक करूंगा। फाइनल वर्ड जफर इस्लाम, आर वी गोइंग टू सी Manipur discussed in Parliament? Are you going to out the opposition on the fact that, as you are claiming, that they know the facts but they are deliberately derailing and disrupting Parliament and not debating? When are you going to do that? Zafar Islam, final word, have to wind up. Absolutely. Anand, I am spot on as far as when I am making the statement that the opposition leaders, they are fully aware, because when the meeting held, the Honorable Home Minister briefed everyone, but they just want to pretend that they were not aware. Secondly, their intention is to disrupt the Parliament. They do not want the discussion, but now they have forced by no confrontation motion put in motion. Now they have forced us to discussion should take place. Discussion will take place. All the truth will come out. They will be ripped apart. I am telling you, they will be ripped apart. What posturing? No, but why did you wait for 5 days? They will stand exposed. Why did you wait for 5 days to say that they will be ripped apart? They will be exposed. I think you could have done it on day 1. No, we as the ruling party always wanted to have a constructive dialogue with them. So whatever discussion, as a matter of principle, that let the discussion, let discuss Sir, what issues need to be I am discussed on the floor of the Parliament in BSc. So we discussed, we arrived at consensus. Yet they changed their mind when we actually. So then make it public, sir. Make the consensus public.
make the consensus public, make them sign on a written document that there is consensus, there will be discussion and they will allow Parliament to function. Put that document and ask all the newspapers, all the news channels to put it out there and headline it, sir, that there is consensus. Then the next day, if there is disruption and if there is no debate, then you hold those people who are going back on their word accountable. Let's make it public. That's my first request. The second request, sir, please look at your record of Parliament functioning. It is on the wane over the last 3 to 4 sessions. So that's also reflective on a commitment that was made that Parliament will function and business will be conducted. Lesser number of days in Parliament sessions and lesser productivity is something which is reflective in the numbers, and that's not a happy sign or a good sign, sir, especially when you're coming towards the end of your second term. I have to wind up on that note. I thank all our guests for a very engaging and a very, very seriously contested debate. Thank you very much. We're going to take a very short break. When we come back, we get you the story of a vlogger who was viral. More than 6 million views to his vlogs. But he decides to leave his country and come to India, where he seeks asylum. QCAA 2019. The story of Piyaru Bhil. When we come back, stay with us. Co-powered by. Tweet sound by Zoram Thanga, senior. Will you speak to him, or will you inform this to the central government? No, I don't. I talked with one honorable minister regarding the what is happening in Mizoram, and I could not get his line, but I got one line from one of the minister, and I convey. Minister of Mizoram. Minister of Mizoram, one Nano. I call him and I convey my message to him to keep safe, this and that. So another one question is, there are so many bunkers by the civilians, from both these sides. People with arms, they are there. What are you doing to stop this? Because until and unless disarm things are made, things will not fall in place. No, we have so many checking posts by common people. We have jointly the central government and the state government forces, security forces, jointly destroyed many bunkers, both hill and valley, and we will continue to destroy. We will not allow any kind of bunker in the hills, either in the valley. Thank you. Kamalika, my colleague, joining us, getting us the latest on ground. Kamalika, the Chief Minister there allaying fears, saying that the situation is getting better, but also talking about how this issue has now spread beyond the borders of Manipur into other states. And the big question is, he has lashed out on the Chief Minister of Mizoram. He has said that Honorable Zoram Thangma does not have any right to, as a Chief Minister, to go into a rally. And he has also questioned that how come the Chief Minister of Mizoram gets involved in issues of Manipur. So it is clearly now not only the case of Manipur, now it is also clearly seen that the Manipur Chief Minister is hitting out in his counterpart in Mizoram, and he is saying that he does not have any right to interfere into Manipur. That is another very big point in his interview when he spoke to us, with us exclusively, that that in no way Mizoram CM can get into this thing. So this is a very big statement by the Chief Minister of Manipur, where he says to CNN News 18 that he questions that how Zoram Thangma, being the Chief Minister of Mizoram, gets himself involved into Manipur affairs. Can any other Chief Minister do it? And he has also reached out to a couple of ministers in Mizoram. He tried to reach out to Zoram Thangma, that's what he told us. So it's a very big statement, because things were like that in Mizoram, this rally took place. Some of the Métis of who stays in Mizoram, they were evacuated to Imphal. All these things were going amidst all these things. This fight is now clear, and the fight is not in Manipur, but the fight is also now between, obviously the Manipur Chief Minister lashing out to Zoram Thangma is a very big point.
And when you asked him about whether he had spoken to his Mizoram counterpart, the Chief Minister Zoramthanga, he said he hadn't been able to get in touch with him. This all comes in the backdrop of the comments that were made 2 days ago by the Chief Minister of Mizoram, where he said that a temporary painkiller is not enough. We need a permanent solution, and the centre needs to look into this. Yeah, absolutely. And there where he is trying to say, the Biren Singh is trying to say that who is he to make such comments? If something happens in Mizoram, then the Manipur Chief Minister will not speak on that. So why is he speaking on that? That is the thing. On the other hand, still the big question is so many arms, so many ammunition, so many checkposts, so many bunkers by civilians. That tough question was also asked by CNN News 18 to Biren Singh, where he said that the central and the state government, they're trying to dismantle all these bunkers and checkposts. But the fact remains that on ground in Manipur, there are various checkposts that have been made by civilians. So one big thing, definitely, Manipur CM lashing out on the Mizoram CM because of this rally and the fact that the Chief Minister himself was there in the rally. Second important thing is obviously this bunkers and this arms. What is the CM doing in it? That was a big question which we asked to him, and his answer was this. And along with that, another big thing which came up is definitely he's trying to make some legislative committee, has made some legislative committee. They will try to reach out, but things are not okay in ground, though there is no untoward incident. But there was this firing yesterday in More that he mentioned. But obviously this exclusive interview which we did with Biren Singh, the big statement coming out from the Manipur CM is that he directly lashes out, he directly hits out to Zoramthanga, the Mizoram CM. And it's a super exclusive. It's an interview with the Chief Minister of Manipur, N. Biren Singh. CNN News 18's Komalika Sengupta has spoken with the Chief Minister of Manipur even as the state remains on edge. The Chief Minister there going on to say that the Mizoram CM should not have interfered in the issue of Manipur, and that he has spoken to his counterpart from Mizoram to ensure that there is no panic, there is no fear, and most of all, there is no fear-mongering. There has been protest in Aizawl. There has been incidents in More. Manipur still is not normal. We have with us the Chief Minister of Manipur, Biren Singh ji. Sir, when will Shanti, when will peace come in Manipur, and why peace is an unknown thing now in Manipur? No, you see, Kamalka, peace is almost returning. You know, last 10-20 days, no unwanted incident was taken place except yesterday's incident. What makes a viral vlogger who gets millions of views leave his country and seek shelter in Bharat? Pyaruram Bhil is a story that all of us must take cognizance of. Thousands like him have left or fled Pakistan because it's just become unbearable for them to live there anymore. He hails from Pakistan's Bahawalpur, and Pyaruram Bhil is joining us live at this point. Let's go across to him. प्यारूराम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपने तो वंदे मातरम का टी शर्ट भी लगाया हुआ है। भारत क्यों आए पाकिस्तान से? सर, मैं पाकिस्तान पंजाब बहावलपुर से स्टेट करता हूँ और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्टूडेंट रहा हूँ और BBA का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा था स्टडी में, लेकिन दौरान वीज़ा मुझे वो स्टडी छोड़ के आनी पड़ी। वो मेरा बीच में ही रह गया कोर्स और 5 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए थे। और पंजाब के बहावलपुर ज़िला के छोटे से तहसील अहमदपुर से मैं बिलोंग करता हूँ और हिंदू भील कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और सब ये मैंने सफ़र अपना 2 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी हिंदुओं के जो प्रॉब्लम्स है, जो उनका कल्चर है, अगर उनको रियलिटी में अगर कोई ना बताए। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, लोग आते थे मेरे पास और हमारे घर आते थे, वीडियोस बनाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पाकिस्तानी हिंदुओं का जो रियल हालात है वो सबके सामने लेके आऊँ, जो कुछ भी उनका कल्चर है, जो रियलिटी है वो सबके सामने लेके आऊँ। तो 2 साल पहले मैंने ये काम शुरू कर दिया
कोरोना के दौरान स्टडी भी मेरी थोड़ी सी ऑफ हो गई, मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो फिर मैं कुछ ऑनलाइन काम करता रह गया, फाइवर पे, अपवर्क पे, और कुछ और 2 स्किलें थी, 12-13 स्किलें थी, उस पर काम थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, लेकिन अर्निंग बहुत ही लो थी। तकरीबन को महीने का मेरे पास 6 से 7 हज़ार रुपये बनता था, लेकिन फिर भी मैं करता था क्योंकि उस टाइम में फिर कोई सीन नहीं था। तो मुझे एक चैनल है यूट्यूब का, तो उन्होंने एक मुसलमान है, उनका नाम सलीम इकबाल है, विलेज इनसाइडर चैनल है, तो वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप ऐसे करो। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आज भी उनको अपने अच्छे खूबसूरत अल्फाजों में याद करता हूँ। तो उन्होंने मुझे चैनल बना के दिया, उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर दिया जिससे पे मैं एडिटिंग करता था, और उस टाइम से फिर मैं जो है वो वीडियोस बनाना स्टार्ट करती। मेरे पास ये एक ही काम था उस दिन। पाकिस्तान में मिनोरिटी के साथ पहले ही ये होता था कन्वर्सेशन वाला और दौड़ और गाली गलौज देना साथ में, ये टोटली सिस्टम काम वगैरह होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये सोचा कि अगर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया तो यहाँ पे रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब वैसे आज देखा ही जाए तो हर साल कुछ ना कुछ हमेशा कर ही देते हैं, और वो भी डंडे के जोर पे। उन्हें लगता है कि हम वहाँ के महाराजा हैं। हाँ ठीक है, वो इस्लामी मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, काम करे अपना, लेकिन भारत में भी तो सभी जाति रह रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन हर रह रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा बहुत खुशी रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, हमारे साथ कोई ना कोई थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई इंसिडेंट हमेशा कर ही देते हैं। प्यारू का व्यक्तिगत रूप से आपको, आपके परिवार को कभी टारगेट किया गया? सर जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिसमें कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ के टीचर्स और वहाँ के मेरे दोस्त स्टूडेंट्स जो थे वो हमेशा यही कहते थे कि आपका हिंदू धर्म में क्या रखा है, तो आप मुसलमान बन जाओ, आपको हम लड़की दे देंगे, शादी करवा देंगे, घर दे देंगे, जमीन दे देंगे, खुशी रखेंगे, आप कन्वर्ट हो जाओ, आप सारों को कन्वर्ट कर लो। ऐसा मेरे यूनिवर्सिटी की मैम होती थी और टीचर होते थे, वो कहते थे, और मेरे क्लास फेलो थे वो भी कहते थे। कभी किसी के सामने ऐसी बातें होती थी, हम उसी महफिल में उठ के ही साइड पे हो जाया करते थे, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने क्या कहना है। तो रिसेंटली मेरे फूफा के लड़के जो थे वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उनका माइंड वॉश कर लिया गया और उनको मुसलमान बना दिया गया। आज से तकरीबन ये 2 साल पहले की बात। एक ही भाई है, उसकी 5 बहनें, माँ बहन, और सारे वो बिलख रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बच्चे ने मुसलमान हो गया, इसमें इस्लाम कबूल कर लिया, अब नहीं हो सकता। पर प्यारू, अब आप हिंदुस्तान आए हैं, पहली बार आए हैं, आपकी रिक्वेस्ट क्या है? सर इंडिया में सेव है तो उस पॉपुलैरिटी का क्या ही करना है, उस पैसे का, उस खून का क्या करना जो हमें पाकिस्तान में रहते इतने पैसों से मिले। यहाँ पे वहाँ कुछ नहीं मिले, रहने को मिल जाए वही बहुत है हमारे। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेव है। अभी तक हमें किसी तरफ से कोई गाली, कोई धमकी, कुछ भी नहीं मिला। तो आप इंडिया में सेफ महसूस करते हैं? ये फर्क देखने को मिलता है कि उससे तो अच्छा यहाँ पे ठीक है, कोई तंग ही नहीं करता, सुकून से माहौल है, कोई बगैर पूछे बुलाता ही नहीं है, कोई किसी के साथ पंगा ही नहीं है। तो फिर सर इसलिए ये बेस्ट। सर मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि मुझे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए अनुमति दी जाए। सर मैं आते ही कॉलेज गया यहाँ पे अपने पास वाले, तो उन्होंने यही कहा कि अभी आपका वीज़ा ख़त्म होगा और आपको LTV के लिए अप्लाई करना होगा, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। तो जब वो आपको मिलेगा तब आपको जयपुर जाना होगा या कलेक्टर ऑफिस जाना होगा, वो आपको बताएंगे। तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने कहा जी आपकी जो यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंस है पंजाब की, वो आपके हमारे इधर किसी भी या राजस्थान यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल के बराबर नहीं है, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप इतना खुलकर बात कर रहे हैं, बेखौफ होकर बात कर रहे हैं, डर नहीं लगता आपको कि आपके परिवार को वहाँ पाकिस्तान में कोई टारगेट करेगा? सर जो होना है वो तो होके रहेगा ऊपर वाले की तरफ से। बाकी सर मैं डरने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, सर कटवा दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सर ये केसेस ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में ज्यादा सुना जाता है। उसके सेकंड नंबर पे सिंध आता है, उसके बाद बलूचिस्तान, ये और फिर पंजाब आता है। और जिस एरिया में हम रह रहे थे वो एक देहाती एरिया था जी। तो जो पास के मुस्लिम्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे, बट वो भी कहते थे कि
क्या आप मूर्तियों की पूजा करते हो और क्या आप किस भगवानों की पूजा करते हो, और इस तरह से कहा जाता था। लेकिन हमने कहा भाई तो आप क्या जैसे कहते हैं आप ठीक है, बस हमें कुछ हम जैसे हैं वो सुपर है। अगर हम पहले ही अगर किसी में मुसलमान पैदा होते तो हम मुसलमान ही पैदा हो जाते, हिंदू क्यों पैदा हुए? ये सवाल करते थे तो वो कहते थे ये तो अल्लाह जाने। हमने कहा अल्लाह जाने तो ये अल्लाह ही जाने कि हम जैसे पैदा हुए हैं, जिस तरह से भगवान ने हमें पूरा भेजा है तो कोशिश करेंगे हम पूरा ही रहें। सर जिस एरिया में हम लोधी में यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से तकरीबन हमारे वहाँ से आए हुए तकरीबन 2 से 3 हज़ार हिंदू जो है वो अभी बैठे हुए हैं। तो उनके पास ना कोई प्लॉट वगैरह ना कोई घर है, कुछ भी नहीं है। मैंने उस पर एक ब्लॉग बनाया था और मैं उस ब्लॉग में सब कुछ दिखाया था। मैंने कहा ये अगर रहने के लिए हमें घर दे दिया जाए, परमिशन दे दी जाए कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारी कोई भी कुछ भी अपील नहीं है। जो भी उसमें से हिंदू स्टूडेंट हैं, जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको स्कूल लगवा दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई हमारी बहुत जरूरी है। थोड़ा रहने को मिले ना मिले, लेकिन स्टडी इंसान को क्या बनाती है वो मुझे पता है। जी, विद्या बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ी देन है। तो that's what his appeal is. Piaru Ram, thank you very much for speaking with us. With that, it's a wrap on this edition of The Right Stand. Brass Tacks with Zaka. Good evening, this is Brass Tacks. I'm Zaka Jacob. Prime Minister Modi was in Rajasthan today, where he made an all-out attack against the Ashok Gehlot government as well as the India alliance. He referred to the Red Diary, saying it has names of some bigwigs of the Congress party and soon those names will be out. He also asked if crimes against women in Rajasthan should not get the same attention as crimes against women in Manipur. In a message to the India alliance, he also said that it's time to quit India of corruption, quit India of dynastic politics, and by just changing its name, past sins cannot be washed away. But the opposition is having none of it. They say that the no